দেশ, মোৰ মৰমৰ দেশ। মই কি কৰিব পাৰোঁ বাৰু মোৰ নিজৰ দেশৰ কাৰণে? মোৰ প্ৰাণতকৈও আপোন, মোৰ অতি চেনেহৰ, অতি মৰমৰ মোৰ দেশ। আমি সেই বীৰ জোৱানৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যি আমাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিলে। সেইসকলক সন্মান জনাই আজি এই লেচনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইজি ৱে টু লাৰ্ণ। আজিৰ লেচনটো হৈছে ক্লাছ 8ৰ उससे ना कहना। उससे ना कहना। एक घर का आंगन, इस आंगन के एक और बुढ़िया चौकी में खाना पका रही है। आयु कोई 60-65 के बीच। इस बुढ़िया का नाम लाजवंती है। गांव वाले उसे लाजो पुकारते हैं। चौके के सामने एक चारपाई के पास लकड़ी की एक कुर्सी है। कुर्सी पर बलवीर नाम का एक नौजवान लड़का बैठा अखबार पढ़ रहा है। बलवीर लाजवंती का बेटा है। कुर्सी पर बैठा बलवीर अपने पांव पास ही रखी हुई चारपाई पर टिकाया हुआ है। अखबार पढ़ने में संलग्न उसका मुंह खुले अखबार के पीछे ढका हुआ है। अखबार सामने चारपाई पर पटकते हुए अकस्मात कुर्सी से उठ खड़ा होता है। बलवीर: माँ, मैं आज नंबरदार के पास जाकर अपना नाम लिखवा दूंगा। लाजवंती: फिर वही बात। बलवीर: तुम नहीं मानोगी, तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन मुझसे और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। लाजवंती: हाथ पर हाथ धर तुम्हें काहे को बैठना है? घर का काम थोड़ा है, अगर किसी को करना हो। बलवीर: घर का काम, घर का काम। क्षण भर के लिए जैसे विचारों में खो जाता है। लाजवंती: अपनी जमीन है, दौड़ डांगर है, बुढ़ापे में मुझसे यह कब सब संभाला जाएगा। बलवीर: जब बापू तो तुमसे ईश्वर ने छीन लिया था, तब कैसे तुमने सब कुछ संभाला था। ইয়াত প্ৰথম দৃশ্যটো দেখুৱাইছে যে ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে, বলবীৰ নামৰ ল'ৰাটোৱে চকীত বহি, কাঠৰ চকী এখনত বহি বাতৰি কাকত পঢ়ি আছে আৰু মাকে কি কৰি আছে, খোৱাৰ যোগান ধৰি আছে, ৰান্ধি আছে তেওঁ। তাৰপাছত হঠাতে বলবীৰ চকীৰ পৰা উঠি বাতৰি কাকতখন সেই বিচনাখনতে থয়, চাৰপাই বুলি কৈছে, সেইখন বিচনাখনতে থৈ মাকক কয় যে মই নৱদাৰ ওচৰলৈ যাম, গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কয়, নিজৰ নামটো লিখি আনিম। মাকে তেতিয়া কয়, ঘৰৰ ইমানখিনি কাম আছে, তইনো আকৌ কেলৈ যাব লাগে, ইমানবোৰ কাম কৰিলে হয়। সি কৈছে, তুমি এতিয়াও মোৰ কথা শুনা নাই? মই কৈয়ে আছোঁ, মই যাব লাগিব, মই নাম লিখুৱাব লাগিব, মই নাম লিখুৱাই আহিব লাগিব, তুমি মোক যাবলৈ দিয়া। মাকে কিন্তু বাধা দিছে, যাবলৈ দিয়া নাই। বলবীৰে তেতিয়া উপায় নাপাই মাকক কৈছে যে গোটেইখিনি কাম দেখোন তুমি আগতীয়াকৈ অকলশৰে চম্ভালি আছিলা, এতিয়া মইনো সেইবিলাক কাম কিয় চম্ভালিব লাগে। আৰু কি কৈছে বলবীৰে, তব তো হম দোনো ভাই ভি ছোটে থে। আমি দুয়ো ভাই ককায়েক ভায়েক আমি দুয়ো সৰু আছিলোঁ তেতিয়া, যিখিনি তুমি দায়িত্ব লৈছিলা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পাছত। मैं तुम्हारी गोद में था, शम्मी तुम्हारे उंगली थामे रहता था। शम्मी কোন হয় এতিয়া? बलवीৰৰ ककाएक। लाजवंती: ईश्वर ने मुझसे ज्यादती की, अब तू तो जुल्म ना कर बेटा। बलवीर: इसमें जुल्म की बात क्या है माँ? लाजवंती: मैंने शमशेर को हंसते खेलते फौज में भर्ती करवाया, ये मेरा ही कलेजा था, मेरे सिर का साय फौज में काम आया, मैंने उनके बड़े बेटे को फिर फौज में भेजा, ये मेरा ही कलेजा था। बलवीर: और अब तुम्हें क्या हो गया है माँ? लाजवंती: यह मेरा ही कलेजा था, मैंने सोचा
उसका बाप फिरंगी की लड़ाई लड़ता हुआ मरा। उसकी आत्मा खुश होगी अपने बेटे को अपने देश की फौज में देखकर। ইয়াত লাজৱন্তী আৰু বলবীৰে এইটো কথা পাতে যে শমশেৰ, শম্মী বুলি কয় তাক, তাৰ ককায়েক বলবীৰৰ ককায়েক শমশেৰকো ক'ত যোগদান কৰালে? ফৌজত, আৰ্মি জইন কৰালে। দেউতাকো ফৌজতে আছিলে, দেউতাৰ সেই তেনেকৈ মৃত্যু হৈছিলে। শমশেৰক তেনেকৈ পঠিয়ালে, সুখেৰে পঠিয়াইছিলে মাকে, হাঁহি মাতিয়ে পঠিয়াইছিলে। কিন্তু কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে দেউতাকে যিহেতু মৃত্যুবৰণ কৰিলে, শ্বহীদ হ'ল দেউতাক, ডাঙৰ পুতেকক যদি তেনেকৈ ফৌজত নাম লিখুৱাই আনে বা ফৌজত ভৰ্তি কৰায় তেতিয়া তেওঁ সুখী হ'ব, তেওঁ আত্মাই সুখ লাভ কৰিব বুলি ভাবিলে। সেইকাৰণে সৰু ল'ৰাটোক যাবলৈ দিবলৈ বিচৰা নাছিলে মাকে। তেতিয়া বলবীৰে কি কয়, अगर बापू आज जिंदा होता तो वो मुझसे कभी ना रुकता। वो सिपाही था, वो सुरमा था। लाजवंती, वो सुरमा था। कहते हैं 7 गोलियां उसकी छाती में लगी, पूरी 7 गोलियां ठंडी हुई, तब कहीं उसकी राइफल उसके हाथ से छूटी। बलबीर, उस शेर बाप का बेटा मैं, हमारे देश की पवित्र धरती को बेरी रोंगटा चला जा रहा है। माँ, तू मुझे यो बांध कर ना रख। মাকে দেউতাকৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিলে সেই কথাষাৰ ইয়াত কৈছে যে 7টা গুলি লাগিছিলে দেউতাকৰ, আৰু তেতিয়াহে তেওঁ হাতৰ পৰা ৰাইফলটো পৰিছিলে। তাৰ আগলৈকে তেওঁ যুদ্ধ লাগিয়ে আছিলে। দেউতাকৰ কথা শুনি বলবীৰে কৈছে, অঁ সেই সিংহ পুৰুষৰ ল'ৰাই মই, মোক ৰখাই নাথাকিবা, মোক ভৰি ধৰি নাথাকিবা, মোক যাবলৈ দিয়া, সেইবুলি মাকক কয়। लाजवंती, सारा दिन तू अखबार में सिर दिए रहता है। बलबीर, घर बैठा मैं तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। मेरे सारे साथी भर्ती हो रहे हैं, पीछे गांव में अकेला, मुझे खाली कोठे खाने को दौड़ेगा। माँ, तुमने वो तस्वीर देखी है हमारे प्रधानमंत्री की? अखबार उठाकर माँ को दिखाता है। लाजवंती, हाय मैं मरी, चिंता में खोया हुआ वो मुखरा, ये तो गुलाब की तरह खिला रहता था। बलबीर, इसके साथ धोखा हुआ है, जिसे वो भाई कहता था, उसी भाई ने आज इस पर हमला कर दिया है। जिस आज़ादी के लिए सारी उम्र यह कष्ट झेलता रहा, आज वो आज़ादी फिर खतरे में है। लाजवंती, हिंदी चीनी भाई भाई, अभी कल की बात है, गली गली बच्चे नारा लगाते थे। ইয়াত বলবীৰে বাতৰি কাকত যিহেতু সি পঢ়ি আছিলে, গোটেই খবৰ সি মাকক কৈছে যে কি হৈছে, হিন্দুস্তানত মানে ভাৰতক হামলা কৰি দিছে। কোনে কৰিছে? চীনে। তেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ কথা কৈছে, জৱাহৰলাল নেহৰু, ফটোখন দেখুৱাইছে বাতৰি কাকতত, আৰু কৈছে, মাকে কৈছে যে আগতে হাঁহি থকা মুখখন এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল চাচোন, সেইবুলি কৈছে। তেতিয়া বলবীৰে কৈছে, হয়, কাৰণ আগতে তেওঁৱে ভাবিছিলে যে চীন ভাই ভাই হয়, হিন্দী চীনী ভাই ভাই হয় বুলি তেওঁৱে কৈছিলে, কিন্তু ভাবিছিলে তেওঁ, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া সেই চীনীয়ে তেওঁক কষ্ট দিছে, আমাৰ দেশক কষ্ট দিছে। बलबीर, पहले उन्होंने मंचूरिया पर काबू किया, फिर चिकियांग पर दबदबा जमाया, फिर तिब्बत उनके आतंक का शिकार बना। पिछले दिनों वे आज़ाद मंगोलिया पर दौरे डाल रहे थे और अब हमारी सरहद में घुस आए हैं। लाजवंती, मैं तो हैरान होती रहती हूँ। पथरीले वीरानों के लिए कोई दोस्त की दोस्ती गवा दे। कोई कह रहा था, जो इलाके उन्हें हथियाया है वीरान पहाड़ियाँ हैं जिनकी हमने कभी रखवाली तक नहीं की थी। बलबीर, ये तो उनका पहला पड़ाव है, यहाँ से वे गंगा और यमुना के मैदानों पर टूट पड़ेंगे। लाजवंती, उन्होंने सोचा होगा हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं, इन्हें हराना क्या मुश्किल है। ইয়াত
বলবীৰে যিহেতু আখবাৰ পঢ়ি আছিলে সেইটো সময় আখবাৰ গোটেইখিনি সেই বাতৰি মাকক কৈছে, লাজৱন্তীক কৈছে যে কেনেকৈ চীনে আক্ৰমণ কৰিছে, কেনেকৈ আহি ক'ৰ পৰা আহি সীমাত সোমাইছেহি। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কৈছে যে আগতে ভাবিবই নোৱাৰি যে ইমান পাহাৰৰ মাজতো সিহঁতে আক্ৰমণ চলাব বা সেইফালেদি সোমাব। তেতিয়া বলবীৰে কৈছে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম ষ্টেপ বুলি কৈছে। আৰু তেতিয়া কি কৰিছে, ইহঁতি গংগা যমুনা আক্ৰমণ চলাব বুলি বলবীৰে লাজৱন্তীক কৈছে। লাজৱন্তীয়ে তেতিয়া কৈছে যে ইহঁতি সকলোৱে ভাবে চাগে হিন্দুস্তানীয়ে নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগোতেই যাব, সিহঁতক হৰুৱাবলৈ ইমান অসুবিধা নহ'ব বুলি লাজৱন্তীয়ে কৈছে। ये नहीं मालूम कि इस देश के लोग किसी और ही मिट्टी के बने हैं। लाजवंती, जवाहर भाई की एक मुस्कान के लिए तो चाहे कोई भी मोल देना पड़े हंसते हंसते दे देंगे। एक बार उसकी मोटर हमारे स्कूल के पास से गुजरी थी, तब हम उस्तादनियों ने मोतियों की झालर पिरो कर उसकी राह में चादरें बिछाई थी। बलबीर, उस तुम्हारे वीर जवाहर की मांग है, देश का हर नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस ले। বলবীৰে যেতিয়া মাকে কৈছিলে, লাজৱন্তীয়ে যেতিয়া কৈছিলে যে সকলো বাহিৰৰ চীনে কি ভাবে যে হিন্দুস্তানীয়ে নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি থাকে, তেতিয়া বলবীৰে কৈছিলে যে কিন্তু সেই দেশৰ মানুহখিনিয়ে নাজানে আমি কি মাটিৰে আমি গঢ়া। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ এদিন যেতিয়া তেওঁৰ গাড়ী যেতিয়া বেয়া হৈছিলে, সেইটো সময়ত স্কুলৰ ওচৰতে যেতিয়া গাড়ী বেয়া হৈছিলে, তেতিয়া কিছুমান মহিলাই আৰু তেওঁ মিলি কি কৰিছিলে, তেওঁৰ কাৰণে ৰখি আছিলে, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাৰণে কিদৰে ৰখি আছিলে সেইটো কথা কৈছে লাজৱন্তীয়ে। বলবীৰে তেতিয়া কয় যে সেই জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছে যে আমাৰ দেশৰ যিখিনি নজৱান আছে সেইখিনি কি কৰিবলৈ কৈছে, দেশৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিবলৈ কৈছে। मैं तुझे भर्ती नहीं होने दूंगी, यह बात तू कान खोल कर सुन ले। एक बेटा मैं पहले ही भेज चुकी हूँ, आज कितने दिन हो गए हैं उसकी कोई खबर नहीं आई। राह देखते मेरी तो आंखें भी थकने लगी है। बलबीर, तुमने मुझे फौज में ना जाने दिया तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा, इस गांव में अकेला मेरा दिल नहीं लगेगा। लाजवंती তেতিয়া কয় যে যি নহওক লাগে মইতো কেতিয়াও আকৌ ফৌজত যোগদান কৰিবলৈ নিদিওঁ। এটা ডাঙৰটোক মই পঠিয়ালোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই তাৰ একো খবৰেই পোৱা নাই। তাৰপিছত তেতিয়া বলবীৰে কৈছে যে তুমি যদি মোক যাবলৈ নিদিয়া, মই যিকোনো উপায়েৰে মই গাঁৱৰ পৰা ওলাই যাম, মোৰ ইয়াত মন ভৰা নাই। लाजवंती, तुम्हारे दिल का क्या है, इसका इंतज़ाम भी कर लिया है मैंने। अगले महीने में मैं तेरा ब्याह कर दूंगी। যে লাজৱন্তীয়ে তাক কয়, বলবীৰক কয় যে একো নহয়, তই ইয়াতে থাক, মই অহা মাহতো বিয়া পাতি দিম সেই বুলি কয়। যে বলবীৰে কয় शम्मी से पहले मेरी शादी, यह तुम क्या कर रही हो माँ। लाजवंती, इसमें क्या है। बलबीर, बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई ब्याह कर ले, ये कहाँ का न्याय है। लाजवंती, उसका भी हो जाएगा, वो लौट तो आए, लड़की वाले खुद जल्दी मचा रहे हैं। बलबीर, माँ, अखबार में आज एक अजीब खबर छपी है। 80 साल का एक बूढ़ा प्रधानमंत्री की कोठी पर गया और जीवन भर की सारी पूंजी भेंट कर वो बोला, मेरे 2 पोते नेफा में लड़ रहे हैं, जब तक वे दुश्मन को खंदेर बाहर ना कर दे मैं उनका मुंह नहीं देखूंगा। बलबीर का गला रुध जाता है, लाजवंती की आंखें सजल हो जाती है। ইয়াত কৈছে যে দুই মাজৰ এতিয়াও কথা হৈছে, মাকে যাব নিদিয়ে আৰু বলবীৰৰ খুবেই যাবলৈ মন, ফৌজত ভৰ্তি হ'বলৈ যোগদান হ'বলৈ তাৰ খুবেই মন আছিলে, কিন্তু মাকে দিয়া নাই।
বলবীৰে তেতিয়া কৈছে যে মোৰ ডাঙৰ ভাই মোৰ ককায়েক আছে মোৰ দাদা আছে তাৰ আগতে মোৰ বিয়া কিয় পাতিব লৈছা তে লাজৱন্তীয়ে কৈছে সি আহি লওক তাৰো বিয়াখন হৈ যাব তেতিয়া বলবীৰে কয় যে আখবাৰত বাতৰি কাকতত এটা খুব আচৰিত এটা নিউজ এটা আহিছে খবৰ এটা আহিছে যে এজন বুঢ়া মানুহ এজন 80 বছৰ এজন বুঢ়া মানুহ এজন নিজৰ যিমান ধন আছিলে যিমান টকা পইচা আছিলে সকলোবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰীক দি কৈছে যে যেতিয়ালৈকে মোৰ ল'ৰাৰ নাতি কথা কৈছে যে মোৰ নাতি দুটাই নেফাত যুদ্ধ লাগিবলৈ কৈছে এটি যেতিয়ালৈকে ঘূৰি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এটাৰ মুখে নাচাওঁ সেই বুলি কয় যেতিয়ালৈকে জিকি নাহে বুলি কৈছে তেতিয়ালৈকে মই এটাৰ মুখে নেদেখোঁ সেই বুলি ক'লে लाजवंती ले बेटा मेरे ये कंगन फंड में दे दे तेरे बाप की निशानी थी अपनी कलाइयों से कंगन उतार कर दे देती है ते लाजवंतीয়ে যেতিয়া খবৰটো শুনিলে তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে নিজে কি কৰিলে নিজৰ হাতৰ চুৰি দুপাত বলবীৰক দি দিলে ক'লে যে এইটো তই ফণ্ডত দি দে बलवीर माँ जिंदाबाद कितने दिनों से मेरी नज़र तुम्हारी कंगनों पर थी लाजवंती मुझे पता है माँ को किस बात का पता नहीं होता कैसे तू मेरे कंगनों की ओर देखा करता था जब सरकार ने सोने की अपील की थी बलवीरे তেতিয়া কয় যে হয় মা তুমি ঠিকে কৰিছা আৰু কয় যে মই আগৰ পৰাই মোৰ চকু আছিলে তোমাৰ এই চুৰি পাতৰ ওপৰত সেই সোণৰ চুৰি পাতৰ ওপৰত তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কয় যে মই গম পাইছোঁ মই সকলো কথা গম পাইছোঁ কেনেকৈ তই মোক খাৰু দুপাতলৈ চাই থাক তেতিয়া চৰকাৰে সোণ বিচাৰিছিলে সেইটো সময়ত তই কেনেকৈ মোৰ চুৰি দুপাতলৈ চাই থাক মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ बलवीर उस रात जब तुम सो रही थी मेरा जी चाहा चुपके से तुम्हारे कंगन उतार लूँ बलवीरे माকক কৈছে যে যেতিয়া তুমি সিদিনাখন শুই আছিলা মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মনে মনে তোমাৰ সোণৰ খাৰু দুপাত লৈ যাওঁ দি থৈ আহোঁ সেই বুলি ভাবিছিলোঁ लाजवंती तुझे अपना देश माँ से ज़्यादा प्यारा है बलवीर खामोश रहता है যে লাজৱন্তীয়ে কয় যে মই গম পাইছোঁ তই নহয় জানো এই কথাষাৰ যে তই মাকতকৈ বেছি দেশকহে বেছি ভাল পাওঁ लाजवंती अच्छा मैं पानी भर लाऊं घड़े में एक बूंद भी नहीं है মাকে ক'ত ওলাই যায় কলহ এটা লৈ যায় কয় যে মই কুঁৱালৈ যাওঁ সেই তাৰ পৰা মই পানী ভৰাই আনোগৈ बलवीर तुम पानी भरने जाओ और मैं नवदार के यहाँ जाकर नाम लिखवा आता हूँ তেতিয়া শেষত মাকেতো একো নকলেই বলবীৰে ক'লে যে তুমি তেতিয়াহ'লে পানী লৈ আনাগৈ পানী ভৰাই আনাগৈ মই ক'লৈ যাম মই নৱদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ নৱদাৰ ওচৰলৈ যাব নিজৰ নামটো লিখাই আনিবগৈ তেওঁৰ ওচৰত আজি এই লেচনটোৰ এই পাৰ্টটো ইয়াতে মই শেষ কৰিছোঁ নেক্সট পাৰ্টৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ